Hello student, welcome to next lecture of programming in C. This is our fourth lecture of chapter 2 basic of C programming. So let's start. First we see the learning outcome of today's video. First is data type conversion in C. So there are two types of data conversion, implicit type and explicit type conversion. Okay, so these two types we see in this lecture. And at last we see the use of comment in C. So these are the learning outcome of today's video. So let's start first with data type conversion in C. A typecast is basically a conversion from one data type to another data type. In simple words, when there is conversion of data type from one to another, that process is called as data conversion. Okay, we use the various data type in C like integer, float, character. Okay, so that in some expression where multiple data types are used, that time it required data conversion. Okay, so basically there are two types of data conversion. First one implicit type conversion and second one explicit type conversion. Okay, first we see the implicit type conversion. It is also called as or also known as automatic type conversion. Okay, then implicit type conversion done by compiler is on its own. Okay, so it is implicit type. It is responsibility of compiler. Okay, without any external trigger from user. So implicit type conversion कौन परफॉर्म करेगा? कंपाइलर. ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगा वो एंड इट इज परफॉर्म बाय कंपाइलर. जनरली टेक प्लेस व्हेन इन एन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट. ओके, व्हेन वी यूज एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल में एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, सो पाई have the float data type. Why? Because the value is 3.14 and if radius is 3. Okay, radius is integer. That time multiple data type is used in the expression. Okay, in such condition type conversion take place to avoid the loss of data. Okay, so in that the conversion takes place. Why it take place? Because some data may be lost if you not convert the data type. Okay, so to avoid the loss of data, the compiler perform the implicit type conversion. All the data types of the variable are upgraded to the data type of the variable with largest data type. Okay, it is possible for implicit conversion to loss information sign can be lost. Okay, so conversion में data is information वही रहेगा, उसके साइन में भी लॉस हो सकता है, कैन बी लॉस. ओके, सो माइनस प्लस जो माइनस साइन रहेगा तो मे बी लॉस इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. we see one example of implicit type conversion. Okay, here in the program first header file is declared, then inside main function one data type one variable is declared, integer type variable x is equal to 10, and second variable of character y is equal to a. Okay, so x is the integer type and y is the character type. Okay, then y implicitly convert to integer. ASCII value of a is 97. Okay, so here I write one formula, x is equal to x plus y, but problem is x is the integer type variable and y is the character type, so addition is not possible. In this case compiler क्या करेगा, x का वैल्यू कितना है 10 एंड स्मॉल a का ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज इक्वल टू 97. सो वो क्या करेगा, a की जगह पे 97 यहाँ पे ऐड करेगा. सो x इज इक्वल टू x प्लस वाई. x का वैल्यू है 10 एंड y का वैल्यू है 97. वाई? बिकॉज वी नॉट परफॉर्म एडिशन ऑफ 10 प्लस a. 10 प्लस a का एडिशन पॉसिबल नहीं, तो a का वो क्या करेगा, ASCII वैल्यू उसमें ऐड कर देगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन. x को y को उसने क्या किया, कन्वर्ट किया इंटीजर. ओके, बाय यूजिंग ASCII वैल्यू. ओके, सो x का अपडेटेड वैल्यू हो गया 107. ओके, 97 plus 10 107. Then second one
here we declare one float variable z is equal to x plus 1.0. X is which type? Integer type, and z is float type. Okay, so here also implicit conversion is performed. So the x का value 107 updated value plus 1, so z का value रहेगा 108. Okay, so after execution of this program we get this output. Okay, this program we also see in the practical. Okay, practical में भी हमने ये program execute करके देखा है. Okay, so this is called as implicit conversion. Next one, explicit type conversion. This process is also called as typecasting and it is user defined. Okay, implicit कौन perform करेगा? Compiler. Explicit कौन perform करेगा? User. Okay, user define करेगा explicit type conversion. Here the user can typecast the result to make it of particular data type. Okay, मतलब explicit conversion के लिए कौन responsible है? Programmer और user. The syntax for explicit: first type the data type in bracket and write the expression. Okay, then we see the example. Here C program to demonstrate the explicit typecasting. First header file is declared, then main function. Inside main function we use the double x variable, defined x variable, which is double. Double means it is similar to float. Okay, then explicit conversion from data to integer. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? Explicit conversion हो रहा है x का integer में. Okay, so integer sum is equal to integer x plus 1. Okay, x is 1.2 plus 1 2.2 आएगा. Okay, but इसको किसमें कन्वर्ट किया है? इंटीजर में. सो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? 2. it display only 2. Why? Because sum is integer type. Okay, तो x को उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया. इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया? 0.2 हटा दिया. Okay, so 1 plus 1 2. So sum का वैल्यू आ गया 2. So this is called as explicit. ये यूजर डिफाइन करेगा यहाँ पे. Okay, implicit में ये प्रोसेस automatically done by compiler. Okay, then next point is use of comment. So first one, a comment is an explanation or description of the source code of the program. Okay, हम comment जो लिखते हैं सिंपल. हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो उसका टाइटल क्या है, वो किसके लिए प्रोग्राम डिफाइन किया, उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट. ओके, इट हेल्प्स अ डेवलपर एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ कोड एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम रीडेबिलिटी. ओके, वो हेल्प करेगा प्रोग्राम रीड करने में. व्हेन यू राइट द कमेंट दैट टाइम इन प्रीवियस स्लाइड आल्सो दिस इज कमेंट double slash C program to demonstrate explicit typecasting. Okay, so this is comment. This is not part of code. Here explicit conversion from double to integer. This is also comment. Okay, so comment is not part of code. It is only description to understand the code. Okay, at the runtime our comment is ignored by the compiler. Okay, so when your program is execute, program जब execute compile करेगा तो that time comment are ignore. Okay, comment को वो ignore कर देगा. There are two types of comment in C. A comment that start with slash asterisk. Okay, this is slash and this is asterisk. Star भी बोलते हैं लोग इसको. Okay, slash star or asterisk and finish with the asterisk slash. And you can place it anywhere in your program on the same line or several lines. Okay. So inside these two symbol, okay, if you write anything that is considered as a comment. टर्बो सी में अगर आपने कुछ लिखा, इसके स्लैश स्टार और स्टार स्लैश इसके अंदर कुछ लिखा, that time it is comment. Okay, here we can write comment in single line also and multiple line also. आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो उसको और मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं. ओके, सेकेंड टाइप इज सिंगल लाइन कमेंट. अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है विच इज यूज डबल स्लैश डेडिकेटेड टू द कमेंट सिंगल लाइन. ओके, अगर डबल स्लैश यूज करके लिखा तो आपको सिर्फ सिंगल लाइन पे वो आपका कमेंट लिखना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है डबल स्लैश एंड सिंगल लाइन कमेंट. ओके, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट. सो दिस इज यूज ऑफ कमेंट. Remember this, comment is a not part of your code and it is ignored by compiler when compile the program. Okay, so this is our today's lecture. Thank you.